Hello student, today we will study the remaining part of this chapter, and the chapter is The Tiger King, in which we have studied कि सर जिलानी जंग बहादुर नाम का राजा था. When he was only 10 days old, जब एस्ट्रोलॉजर ने उसका प्रेडिक्शन दिया था तब एक मिरेकल हुआ था और कहा था कि मेरी मौत किससे होगी, अगर ये बताओ तो मैं मानूं. एंड एज ही वॉज बोर्न इन, जो उसकी राशि थी वो थी बुल, एंड बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी, तो उसकी मृत्यु एनिमी से होगी. इन दिस वे द ईयर्स एंड ईयर्स पास्ट. व्हेन ही वाज 20 years old ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट का नाम है प्रतिबंधपुरम. एंड हियर द रूमर स्प्रेड, रूमर फैलती गई और उसके कान में आई कि इसकी मृत्यु टाइगर से होगी. इन दिस वे स्टार्टिंग टू किल दी टाइगर्स और हंट द टाइगर्स, वो टाइगर्स को मारता गया. एंड ऑल्सो ही बैन टू हंट द टाइगर फॉर अदर्स, ओनली ही विल किल द टाइगर्स. और यहाँ पर बैन लग, और कई बार उसको टाइगर के साथ लड़ना भी पड़ा, कई बार उसका राज्य छीन लेने का भी खतरा उस पर मंडराया, बट ही नेवर गिव अप, उसने कभी गिव अप किया नहीं. फिर क्या हुआ, द टाइगर्स, द नंबर्स ऑफ टाइगर्स एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो गए. सो व्हाट विल ही डू, एंड दैट इज़ व्हाई ही डिसाइडेड टू गेट मैरी, और उसने शादी करने का मन बनाया. एंड ही गॉट मैरिड, शादी भी हुई, एक राजकुमारी से शादी हुई. इन हर स्टेट देयर वर ऑल्सो द टाइगर्स, क्योंकि अपने राज्य में ख़त्म हो गए. नाउ ही स्टार्टेड किलिंग इन हिज फादर इन लॉस किंगडम, उसके ससुर के किंगडम में टाइगर को मारना शुरू किया. देयर वर 99 टाइगर स्किन डेकोरेटेड इन हर पैलेस, 99 टाइगर्स स्किन डेकोरेटेड इन हर पैलेस. 99 टाइगर की स्किन थी वो पैलेस में डेकोरेट होने लगी. नाउ ही वॉज कंसर्न अबाउट द 100th one, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था उसकी मृत्यु 100वें टाइगर से होगी. बट हियर अगेन देयर इज़ नो मोर टाइगर इन हिज किंगडम और इन हिज फादर इन लॉस किंगडम. अब चिंता का विषय ये है कि ना तो उसके राज्य में कोई टाइगर बचा है, ना तो इनके फादर इन लॉस के टाइगर के स्टेट में कोई भी टाइगर बचा है. लेट्स सी कि क्या होता है, क्या उसकी मृत्यु टाइगर से होती है, और क्या उसको 100th one टाइगर मिल जाता है. लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद द किंग. And student, please note the homework because I will give it you during the explanation. Now part 5 of this chapter. The Maharaja anxiety. Anxiety means concern, chinta, worry. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. He has to kill 100 tigers. And fever pitch, see the word fever pitch. अब उसका जो कैसे हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर आगे बढ़ता है, उस तरह से गुस्सा का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत बढ़ गया. बिकॉज ही हैज़ टू किल 100th one, जो अब मिल नहीं रहा था. एंड ही वॉज सो एंग्जियस, सो कंसर्न अबाउट द 100th one tiger. He had this one thought during the day and the same dream at night. The same thing, the same thought during the day and the dream also. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. No more kingdom in his or in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate. Locate means find. So it became impossible to find tigers anywhere. Nowhere the tiger was. Yet only one more was needed. कितने की ज़रूरत थी? Only one, क्योंकि 99 already he had killed. If he could kill just that one single beast means animal, the Maharaja would have no fears left. अब कोई फियर रहेगा नहीं. इफ़ ही किल द 100th one. सो स्टूडेंट, वो टाइगर के साथ लड़ भी पड़ता है, अपने बैर ओनली अपने हाथों से लड़ता है विदाउट वेपन, तो डर नहीं है. डर है तो मृत्यु का. इतना करेजियस इंसान मेंटली कितना वीक है, फिजिकली स्ट्रेंथ बट मेंटली वीक. He could give up
tiger hunting altogether. After killing the 100th one, he will leave the hunting of tigers. But he had to be very or extremely careful with that last tiger because astrologer said that कि उसकी मृत्यु किसके साथ होगी 100th one. What had the late chief astrologer said? There is a question that occurs in his mind. Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. और इसीलिए वो इतना चिंतित नहीं था because astrologer have said that only he will killed by the 100th one, or that is why he fought with the tigers with his bare hand without weapons. उसको पता था कि उसकी मृत्यु ये टाइगर से नहीं बट 101 से होगी. True enough, the tiger was a savage beast after all. He has to concern about the tiger because savage means violent, क्योंकि वो खतरनाक जानवर है. One had to be wary of it. Very cautious, उसके प्रति उसको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. Careful about it. But where was the 100th tiger to be found? कहाँ से मिलेगा the 100th one? Thus the Maharaja was sunk in gloom and sadness. वो बहुत उदास रहने लगी. But soon came the happy news which dispelled that gloom. But his gloom disappeared because in his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. And on that time, some of the sheep were being disappeared. कुछ अदृश्य होने लगी. It was first ascertained that this was not the work of खादेर मियाँ साहेब और वीराशामी नाइकर, कि उसका तो कोई काम इसमें उसका कोई हाथ है नहीं. He was ascertain, he was sure कि ये तो किसी टाइगर का ही काम होगा. Both famed for their ability to swallow the sheep whole. और जो खादेर मियाँ साहेब एंड वीराशामी नाइकर है उसका वो फेमस थे किसके लिए, पूरी शीप को निगल जाने. Surely a tiger was at work. Now he was sure that there is the work of tiger who is killing the sheep, who is hunting the sheep. The villagers ran to inform the Maharaja, and the villagers informed the Maharaja. The Maharaja announced a 3 years exemptions from all taxes for that village and set out on the hunt at place. Now villagers informed Maharaja regarding this. So महाराजा ने क्या किया, पहले कर लगाया था, टैक्स लगाया था. सो एग्जेम्पशन मीन्स फ्री कर देना. उसको 3 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी. और उस विलेज को हंटिंग प्लेस बना दिया. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. इट सीम्ड एज इफ इट हैड won't only hid itself in order to flout. Flout means disorder. द महाराजा's will, जैसी उसकी will मतलब इच्छा के आगे वो डिसऑर्डर मतलब मान नहीं रहा. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड एंड ही वॉज डिटरमाइंड. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट until the tiger was found. He stayed there until the last tiger found. As the days passed, in this way many days passed. He didn't go to his palace. The Maharaja's fury means anger, and obstinacy मतलब कोई एक जिद को पकड़ लेना. Be stubborn mounted alarmingly. Many officers lost their job. इतना गुस्सा हो गए कि कितनी सारे मिनिस्टर को जॉब से निकाल दिया. One day when his rage was at its height, rage means गुस्सा अपने एक हाइट पर चरम सीमा पर था. The Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax for forthwith. अब उसने कह देगा डबल टैक्स लगा दो सब पर. Because he became so angry, he couldn't find the last tiger. He couldn't complete his target. The target was of 100th one. Now I'm going to ask you today's homework. First question: how will the Maharaja prepare himself for the 100th tiger which was supposed to decide his fate? The question is given at page number 14. The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian national
कांग्रेस। हियर दीवान सजेस्टेड कि लोगों में असंतोष का व्यवहार आ जाएगा और हमारी पार्टी किसका शिकार हो जाएगी। शायद ये हमारा जो स्टेट है किसका शिकार हो जाएगा, तो एक पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। शायद हमारा किंगडम है उसके हाथों में चला जाए। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। किंग ने दीवान को भी कह दिया, ओके देन यू रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. Catastrophic means misfortune. वो घर पर जाते and he thought very carefully on it because he was concerned about his job. वो अपनी जॉब के बारे में बहुत कंसर्न था। उसको लगा कि अगर वो 100 टाइगर नहीं मिला तो कुछ मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. He got an idea. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought. वो कहाँ से लेकर आए? एक जू में से एक जू का एक टाइगर उठाकर आ गए and he hidden that tiger in his house. जू का टाइगर था। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged means खींचते हुए, they dragged the tiger to the car and shoved means push roughly into the seat. Now they put the tiger on the back seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. कहाँ पहुँच गया? Where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. And when they reached to the forest, अब वो जगह उसके लिए नहीं थी, so he launched its satyagraha. जैसे सत्याग्रह कर रहा हो, हिल नहीं रहा हो, refused to get out from the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground. Now they tried a lot and pushed the tiger on the ground. यहाँ पर टाइगर को ग्राउंड पर धक्का दे देते हैं फॉरेस्ट। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? ऐसा लग रहा था उसके सामने प्रेजेंस हुआ। You know, generally the tigers, those who are in zoos, are social. They see the human being every day and that is why they इतना चिंतित नहीं होती। अगर जंगल का टाइगर होता है इंसान को देखते ही उसको मार देता है, बट यहाँ टाइगर तो क्या पूछ रहा था? ऐसा लग रहा था सप्लीकेशन, इट मीन्स दैट आस्किंग विथ हम्बल रिक्वेस्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूछ रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? क्या मेरे लिए कमांड है? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap and here Maharaja took, उसको निशान लेते हुए Maharaja took careful aim, उसका निशान लिया at the beast. The tiger fell in a crumpled means crush होते हुए जमीन पर गिर पड़ा। I have killed the 100 tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation means happiness. He became so happy, overwhelmed with joy. वो बहुत ही खुश हो गए। He thought that his vow has been fulfilled. उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। To kill the 100 tiger. उसकी प्रतिज्ञा क्या थी? To kill the 100 tiger. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. उसको ऑर्डर देते हुए, जो वहाँ पर सैनिक थे उसको ऑर्डर दे दिया दैट इसका प्रोसेशन यानी एक बहुत ही सरगस निकाला जाए। एक प्रोसेसन होती है, हम कहते हैं ना रथ यात्रा, वट एवर इट इज़ प्रोसेशन है, इसका ग्रैंड प्रोसेशन हो। ही वॉज सो hastened, he was in hurry. Hasten means जल्दी में, क्विक था। विदाउट
नोटिसिंग एनीथिंग, कोई भी नोटिस किए बिना वो वहाँ से कार में चले गए। इवन उसने वो कंफर्म भी नहीं किया कि टाइगर मरा है कि नहीं मरा, वेदर द टाइगर किल्ड और नोट। आफ्टर द महाराजा's slept, the hunters went to take a closer look at the tiger. The hunters went there and he closer looked, पास में जाकर देखा। The tiger looked back at them, rolling its eye in the bafflement. Bafflement means confusion. The tiger was so confused and it was also looking at the hunter. The man realized that the tiger was not dead. अब वो मैन ने भी रियलाइज कर दिया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और उसकी बुलेट जो थी वो मिस हो गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द whizzing past, it means move quickly, as the gun moved quickly from its ear, and as it was old, बहुत old था, weak था, and that is why it fainted, unconscious होकर गिर पड़ा था। The hunters wondered what this sound do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their job. One of the hunters took aim from a distance of the 1 foot and shot the tiger. And here, the hunter thought that अगर वो राजा को बताएंगे, if they will tell this thing about कि वो वहाँ पर जाकर बताएंगे the tiger was not dead and he missed the shot, तो उसकी जॉब वहाँ से चली जाएगी। It is better कि उसको पता भी ना चले, and that is why the hunter killed the tiger. तो फाइनली 100th वन अभी भी राजा ने मारा नहीं है। This tiger was killed by hunter, not by the king, and king was sure. Without confirm he just moved from there. उसने confirm नहीं किया, वहाँ से चले गए, उसको लगा कि उसने टाइगर को मार दिया। So this tiger was killed by the hunter, not by the king. This time he killed it without missing his marks. और इस बार वो हंटर ने कोई अपना जो मार्क है वो मिस किया नहीं। He didn't miss its aim. Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. That tiger was shown to the all villagers, उसको दिखाया गया, and later it was buried, and it was buried. A tomb was erected over it, और उस पर एक कब्र बनाई गई, एक रिमेम्बरेंस के लिए कि ये टाइगर था वो राजा के द्वारा मारा गया, and it was the 100th one. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. Now, it was his son's birthday, third birthday, and so Maharaja could not give the time to his son and to his wife. इतने समय तक वो busy थे. He was busy in killing the tiger. He had no time to spare for the crown prince. उसके पुत्र के लिए भी उसके पास समय नहीं था। He had no time. But now the king turned his attention to the child. He wanted to spend some time with his child. He wished to give him some special gift on his birthday. He decided to give him something special. He went to the shopping center in the Pratibandpuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. He tried to find something special and he went there in the market in Pratibandpuram, but he couldn't find anything which one is special. Finally he spotted means noticed a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. क्या देने का इरादा किया? Wooden tiger, not real one but the wooden tiger. So he purchased. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. Anna is a currency, old currency. But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of the emergency. अब यहाँ पर शॉपकीपर भी सोचता है इतनी कम प्राइस बताऊंगा, he may be punished.
So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. Our bargain at 300 rupees, जिसकी कीमत थी actually the actual price is 2 annas only, but he afraid of punishment. So he said that the price of the that wooden toy is only not only but 300 rupees, which was a big price. और वो और भी ऐड करता है इट इज़ अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप एंड ही टेकन 300 rupees from the king. Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. That day, father and son played with that tiny little wooden tiger. They both played with that wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quill all over it. और उसमें बहुत सारे उसमें रफ वर्क था. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand, और उसके राइट हैंड में वो pierce यानी चुभ जाता है. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince, और उसने वहाँ से निकाल दिया and he continued to play with his son. The next day infection flared or become wider. Fled means wider. Next day infection था वो बढ़ गया in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. और उसका जो sore means सूज जाना, और suppurating means उसमें जो discharge होता है, जो एक रोग होता है, वो पूरे आर्म में फैल गया. 3 famous surgeons were brought in from Madras, and 3 surgeons को मद्रास से बुलाया गया immediately. After holding a consultation, they decided to operate. ऑपरेशन करने का निश्चय किया, निर्णय लिया. The operation took place. The 3 surgeons who performed it came out of the theatre and announced, the operation was successful. The Maharaja is dead. In this manner, the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. और इसी तरह 100 टाइगर से महाराजा है वो जाने गए और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और महाराजा डेड. यहाँ पर एक वर्ड है, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. देखिए यहाँ पर कितने डरे हुए लोग थे कि उसने फाइनली, वरना क्या होता है कि वेरी सैड न्यूज़ कि राजा मर जाते तो खुश नहीं होते. यहाँ पर खुश होकर बोल गए द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ डेड. और इसी तरह से राजा की 100th टाइगर से मृत्यु होती है.